Today we are going to cover the lecture regarding the business and functional requirements. So previously we have covered the lecture of user requirements in which we have discussed about the use case scenarios, and there were two representation of use case scenarios. First was a text-based use case scenarios, the textual representation of use cases, and another was the use case diagram. So textual based use cases representation was more descriptive, content more detailed. However, the use case diagrams were very feature driven and more focused, but not very much in detail. Today we continue, and those use case scenarios were developed with the help of the users from the user's perspective point of view, especially after you conduct the interviews and joint application development sessions. So business and functional requirements are also the requirements that you gather not only from the interviews but also from joint application development, and also from the observation how the system behaves, how the system is working in an operational way, and also from the questionnaire, also from the documentation. All of those techniques combined together help us out to build the business and functional requirements. Business and functional requirements, they are combination of the high level and middle level and low level requirements. So high level requirements are more often come from the top management, the organizational management, or the leaders who decide that they want to make or get a system developed. And the middle level that comes from the managers, and the low level requirement that comes from the low level data entry operators who actually uses the system. Okay, so today we are going to discuss the business and functional requirements. Both businesses and IT perspectives are needed to determine requirements during the analysis phase. So as we know that the requirements are gathered during the analysis phase. The most effective approach is to have both business people and analysts working together to determine the requirements in the same process of joint application development or interviews that we have discussed in the requirements elicitation chapter, where the analyst comes from the IT people who want to get the system developed, and the business people who will eventually will be the end users who are going to use the system, or they are in charge of the decision making. The analyst must also consider how best to elicit the requirements from the stakeholders, कि कैसे जो है हम requirements elicit कर सकते हैं stakeholders से. So analysts decide कि वो किस तरह से कौन सी technique use करते हैं, or maybe they apply or they use more than one technique together, because in interviews we have like one perspective of the one user. In joint application development we have more than one users, the managers, middle level users, and data entry operators. If one user say कि भाई ये जो है वो rule इस तरह से इस्तेमाल होता है, another user say कि भाई नहीं इस तरह से इस्तेमाल होता है, like managers कहेंगे भाई in the code book business rule इस तरह से define किया हुआ, but in data entry operator कहेगा नहीं सर this rules is written like that way, but it is not how it is implemented, or it is not how it is processed in our organization. So it creates a conflicting environment and resolves how the system actually previous system implements that business rule, and how that business rule is written in the documentation. The process of determining requirements continues throughout the analysis phase, and the requirements and definitions evolve over the time. If we use the traditional development methodologies or process models, the requirements are gathered in the analysis phase and they retain in the analysis phase, and eventually the SRS document is prepared, and then it goes to the specification to the development. But with the agile process models, as the requirements we have like often agile that it represents the change or volatility, so the requirements definition evolves over the time during the development of phase. And it happens because we never know the requirements
at the first place, each and every single requirement in the first place when we start developing the project. So the during the development phase, the requirements often comes from the user, maybe the change requirements or more clarity in the requirements. So this is the evolution process that goes around during the different phases of the SDLC, or a process model that you use for the development of the system. So playing by the rules, what are the business rules? Software applications often enforce business rules. In other cases, business rules aren't enforced in software but are controlled through human enforcement of policies and procedures. So there are two ways to implement the business rules. The software applications often enforce business rules. For example, when you go to the use ATM machine, so the ATM machine, they have in your account mentioned that how much amount that you can retrieve from your account at one transaction. For example, if you are using the ATM card of your own bank, then you have an authorization of retrieving the 25,000 maximum from your single transaction. But if you use your card by another ATM or by ATM of another bank, then you retrieve the maximum amount of 20,000. So the business rule is changed from the different ATM and use it. And if you go use the same if you go use ATM of your own bank account, there's no charges of retrieving the money. But if you use your bank account, if you use your card with another ATM machine, then you have to pay the extra charges. So these are the business rules that are enforced in the software application. In other cases, business rules aren't enforced in software but are controlled through human enforcement. For example, when you come to the bank, you have to process a particular protocol that for opening of a bank account, you have to go to the particular person. For retrieving of your amount, you have to go to the particular cashier. For the paying of the different bills, you have to go to the different person. So these are not mentioned in the software applications, but that these business rules are enforced by the policies. Or when you go into the bank, you have to be in line to get your work done by the bank. So these are the policies and procedures that are enforced through the human involvement. Most business rules originate outside the context of any specific software application. Business rules are a major source of software functional requirements because they dictate capabilities that the system must process to conform to the rules. जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई मैक्सिमम 20,000 या 25,000 जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं सेम बैंक से और 20,000 डिफरेंट बैंक से. सो दे आर द सोर्स ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बिकॉज डिटेक्ट कैपेबिलिटीज. ये सिस्टम को बिहेव करना चाहिए आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस रूल. ठीक है. And most businesses originate outside the context of any specific software application. जो software application बनाई जा रही है, apart from that, from the user's point of view, from the government policies, these business rules come from those people. Even high-level business requirements can be driven by the business rule. High-level business requirements that come from the CEOs or the managers who are running the organization, they are often driven by the business rule. इतना profit maximization होना चाहिए, इतनी equity we have to give to the users in order to retain our market share, and how much cost minimization we have to do. So this is maximum, as we say that the development of the systems eventually have to play its part in profit maximization or a cost maximization, which is the eventual major goal and the high level requirement for the business people. If the business doesn't bring its benefit in the cost or in the profit, that development of a system is of no use and it is wasted, because we invested the money and does not bring any change in the perspective of the profit maximization, जो कि गोल है. अगर वही काम जो है वो सिस्टम के बगैर हमें इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है, मीन्स इट इज़ अ लॉस. फॉर एग्जाम्पल, आई गेव यू द एग्जाम्पल दैट
when you go and use a point of sale system in the supermarket, so there are several products that are put into the cart by the customer. They come to the point of sales, then each product is scanned by the scanner, and that price is uh, scanned through that barcode and entered as an input into the computer screen. And after the scanning of all the products, sum is calculated, and it is paid by the customer, and customer can get his or her groceries carried to the particular vehicle. So that point of sales uh, system is required at that big level, because not every person that is using the point of sale system must remember the cost of the or price of the product, which changes every day, or maybe after certain days, so they cannot remember it. And the scanning and calculating sum of all the products in order to customer to pay for all the products, it will take too much time. Rather than if you go to the Kazi's shop in front of the IICT, so Kazi's a limited number of products. If you go and buy the product, if he has that computerized system installed, the firstly he will scan each and every product and then print out the bill and ask you for the money. So it will uh, the time that he will consume will be wastage, because he remembers the price of each product, and he can give you the product directly to your hand and ask you for the money, because you're not buying the products in the bulk. So that computerized system that is working at the Kazi shop will be the wastage, because there's no use of that system. However, computerized system will eventually bring the profit maximization at the supermarkets, but not profit maximization at the Kazi shop. So even high level business requirements can be driven by the business rules, and to see whether these business requirements are fulfilled in profit maximization or cost minimization. Not all companies treat their essential business rules as the valuable asset they are. If this information is not properly documented and managed, it exists only in the heads of the individuals. So each and every information that will be used in the system must be documented. Otherwise, it resides in the head of the individuals, as we discussed, like lots of ideas or the final year projects or anything that we think भी ये feature होना चाहिए, but we don't document it, तो that will eventually be lost. और बाद में सोचते रह जाएंगे भाई कौन कौन सा चीज़ें हमने सोची थी जो कि हमें रह गई. So various individuals can have a conflicting understanding of the rules, which can lead to the different software applications enforcing a common business rule inconsistently. So as I have told you, there may be the manager's head who have read the code book, he or she has a different idea of the business rule, while at the operation level, when a user is using that system and applying that business rules, it is implemented in the previous software in a different way. So it will create the conflicting understanding of the rules, which can lead to different software applications if you enforce that common business rule from one perspective point of view. So you have to remove that inconsistency between the users, as if this business rules we have to follow the code book, there the company the system will implement that business rule according to that code book, and in the future system that will be used like that. So you have to remove that inconsistency and conflicting understanding of the rule to have the clear view for the implementation before putting the system into the operational mode or the production mode. A business rule is a statement that defines or constrains some aspects of the business. It is intended to assert business structure or to control or influence the behavior of the business. A business rule is a statement which defines the constraints. Constraints means that we have to follow a certain protocol, some aspect of the business. It is intended to assert business structure or to control or influence the behavior of the business. If you know where and how each application implements its pertinent business rules, it's much easier to change the application when a rule changes. तो हमें पता होना चाहिए कि हम बिजनेस लॉजिक जिस तरह से हमारे पास 2 tier or we have 3 tier or 4 tier applications, so we put the business rule at a different layer,
Like we have database layer at a different layer, the application logic at a different layer, the business rule at a different layer, the usage is a different at the client machine or workstation. So it will be easier to change that business rule, that is remain apart from the all those different layers. And if it is clearly mentioned, it will be easy to change the business rule. For example, each year the tax slab for the tax giving people like the income, like us people who are the government employees, even the private employees, the taxation system or taxation rules changes every year. Every fiscal year introduces the new tax slabs, according to which each and every individual who earns a certain amount of time that certain amount of money that comes at a different levels of the money. For example, if somebody earns like less than 5 lakh rupees, the government says you do not have to pay any tax, it is free for you. If you earn more than 5 lakh rupees and less than 10 lakh rupees, you have to pay 10% of your income tax. But if you earn like more than 10 lakh rupees, you have to pay like 12% or 13% of your income tax. But with the new year, they change the rules. If you earn even less than 5 lakh rupees, you have to pay like 5% of tax. So that rule changes every year. So your application will not be changed every year. It will facilitate you to change that business rule that is often changed every year, or give you the ease for the changing. There are different rules for the business. Business rules are decomposed into different categories. For example, the facts, constraints, the action enablers, computation, or inferences. We are going through each part of it. The first one is the facts. Facts means that we cannot change it, or invariants that are unchangeable. So facts are simply statements that are true about the business, means they cannot be changed. For example, every chemical container has a unique barcode identifier, or every product that we sell must have a barcode identifier. ठीक है, so that will be easy for the point of sales person to carry on that barcode. Sometimes if you go to the max budget and if you buy sugar over there, sugar product is not documented with the barcode. So they are often asking भाई कौन सा कोड है भाई शुगर का, ताकि वो अपने सिस्टम में एंटर करें, so that its price is added into your total bill. So the first fact should be for every product will be attached a barcode identifier that will be provide us at ease for the scanning of the product. So every order must have a shipping charge. Each line item in an order every order must have a shipping charge, maybe in online business. Each line item in an order represents a specific combination of chemical grade, container size, and number of containers. Each line item in an order represents a specific combination of chemical grade, container size, and number of containers. So it will be a unique number that will identify कि कौन सा chemical है, कौन सा grade है, कौन सा container है, कौन सा number of container है. For example, recently I have found out when you go and buy a battery from a battery shop, there is a specific code of that battery which encapsulates somehow that the which year or which month it is manufactured, and like how much cost will be approximately for that particular battery. So it is encoded into that particular code. Non-refundable tickets incur a fee when the purchaser changes the itinerary. Non-refundable tickets, even when you buy some traveling tickets or train tickets or air reservation tickets, you are often given a chance that whether these will be non-refundable, or you want to or refundable with modifiable change, or refundable without any charge. So if you buy the non-refundable ticket, they are much more cheaper, कि वो आप modify नहीं कर सकते. आपने एक मरतबा खरीद लिया तो modify नहीं कर सकते. दूसरी होती है non-refundable tickets with a fee to change it. अगर आप अपनी फ्लाइट की टाइमिंग या डेट चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है ताकि आप वो टिकट्स जो है वो चेंज करवा सकें, अदरवाइज फ्री नहीं है. एक होती है रिफंडेबल टिकट जो कि थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं,
लेकिन वो आप बाद में चेंज कर सकते हो। सो आप चीप की तरफ जाओगे तो आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आप महंगे की तरफ जाओगे तो चेंज कर सकते हो, गिव भी नहीं। सो दिस विल बी आल्सो an example of the facts. Sales tax is not computed on the shipping charges. Sales tax is computed on the product. So shipping charge will be like 200 or 300 rupees. Product will be like 50,000 rupees. So sales tax is not computed on the shipping charges. कि वो सेल्स टैक्स उस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किया जाएगा, उसके बाद शिपिंग चार्जेस ऐड किए जाएंगे. नॉट आफ्टर द एडिंग ऑफ द शिपिंग चार्जेस वी अप्लाई द सेल्स टैक्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपन्स, जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो डिफरेंट में, तो आपके पास मिनरल वाटर परचेज करते हो या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप बाय करते हो विद द फूड दैट यू ईट. उस कोल्ड ड्रिंक के साथ अगर वो फॉर या मिनरल वाटर 50 रुपीज़ की है, दैट ऑलरेडी इंक्लूड्स योर सेल्स टैक्स. सो when that you buy the bottle, it contains already the sales tax. But when you give out the whole bill of the restaurant, so उसके ऊपर और ज़्यादा टैक्स लगा होता है, मतलब वो डबल चार्जेस कर रहे होते हैं आपसे या हमसे, which is not right. So constraints restrict the actions that the system or its users may perform. So constraints enforces some limitations or restrictions on the action that the system or users must perform. A borrower who is less than 18 years old must have a parent or legal guardian as a co-signer on the loan. So a person who wants to borrow some loan, for example the educational loan, he must have a parent or legal guardian as a co-signer of the loan in order to provide the guarantee. ठीक है. Yeah, in Western countries, if you want to buy an alcohol, there is a different age limitation. So if you are like 18 years or above 18 years, then you will be able to buy the alcohol. Otherwise, if you are less than 18 years, you cannot buy the alcohol. So these are the constraints. A library, one example of a library patron means chef or head of the library may place up to 10 items on hold. Means he or she can hold up to 10 items. A user may request a chemical on the level 1 hazard list only if he has had hazards chemical training within the past 12 months. So there are different levels of the hazard chemicals. So a user, if he or she has the hazard training in the past 12 months, he will be able to buy the level 1 hazard. All software applications must comply with the government regulations for usage by visually impaired persons. That software application that will be developed in the future will also be used by the visually impaired persons. For example, the color blind people or people who are completely blind people. So you have to enable your software application that and make it usable by the visually impaired people or handicapped people. Correspondents may not display more than 4 digits of the policyholder's social security number. For example, you go to the ATM number after the transaction is performed. There's the receipt of the payment retrieval that comes out from the ATM machine, and over the receipt it is mentioned your account number, but it mentions 2 or 3 digits of the beginning of your account number and 2 or 3 digits of the end of your account number, and between them there are different stars. It does not show your complete account number. So as it is mentioned, the correspondent may not display more than 4 digits of the policyholder social security number. कोई ऐसा सिस्टम है कि वो social security number जो पूरा डिस्प्ले न करे when you use that particular system. So use ATM machine के वो पर्चियाँ जो है हम अक्सर फेंक देते हैं, तो वो इलस्ट्रेट न करे कि यार बैंक अकाउंट किसका हो सकता है और जो है वो कौन सा अकाउंट नंबर जिसमें इतना ज़्यादा बैलेंस जो है वो पड़ा हुआ है. सो commercial airline flight crews must receive at least 8 hours of continuous rest in every 24-hour period. So these are the constraints कि लास्ट टाइम जब उन्होंने फ्लाई किया हो, so they must have 8 hours of sleep or rest within 24 hours. So these are the constraints that will apply through that system, not necessarily in the computer system but with the business rules and from the human enforcement as well. Action enablers. A rule that triggers some activity under a specific condition is an action enabler. If the chemical stock room has containers of a requested chemical in stock, then offer existing containers to the requester.
अगर केमिकल स्टॉक रूम हैज़ कंटेनर्स और केमिकल स्टॉक देन ऑफर एग्जिस्टिंग कंटेनर्स टू द रिक्वेस्टर, अगर वो अवेलेबल हैं तो फिर उसको जो है वो जो पड़े हुए हमारे पास वो हम दे दें। जिस तरह कहते हैं कि भाई स्टोर पे आप जाते हो तो दवाइयाँ अगर उस पर पड़ी होती हैं स्टॉक में तो वो आपको निकाल के देता है, वरना वो अपने पास रख लेता है ताकि ब्लैक में बाद में बेच सके। If the expiration date for chemical container has been reached, then notify the person who currently possesses that container. If somebody who has purchased that chemical container and they are about to expire that chemical container, so the system automatically uh, inform that particular person that this is going to be expired. For example, in your bank account you have mentioned your date of birth. So when your date of birth comes, आप बैंक जो है वो आपको विश करती है कि भाई आपकी जो है आज बर्थ डेट है और हम आपको बैंक की तरफ से एज ए क्लाइंट हम आपको विश करते हैं, ठीक है। सो एक्शन डिपेंडिंग ऑन द रीच ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ द सिस्टम सेंड आउट एन टेक्स्ट और एसएमएस टू द customer भाई हैप्पी बर्थडे टू यू सर। सो it depends on the arrival of the date of birth of a particular customer. If the customer ordered a book by an author who has written multiple books, then offer the author's other books to the customer before accepting the order. कि जब वो बुक जो है वो there are several books that are written by the author, so the system must provide the list of other books also by the author before accepting the order by the particular customer. ताकि वो कहते हैं भाई people who bought this product also bought these products as well. जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं भाई लोगों ने जो जिसने ये परचेज किया उसने ये चीज़ें भी परचेज की। Inferences or inferred knowledge or inferred knowledge. An inference is the rule that establishes some new knowledge based on the truth of a certain conditions. An inference creates a new fact from other facts or from computations. An inference जो है information drive करता है depending on a particular information that already resides. For example, in a database आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल जो है वो 1980 है या 1990 है। सो दैट इन्फ्रेंस इंजन व्हेन यू कैलकुलेट भाई ये जो बैंक अकाउंट जो है वो इज़ ही और इज शी इज़ एलिजिबल टू ओपन अ बैंक अकाउंट, तो डिपेंडिंग ऑन योर डेट ऑफ बर्थ वो आपकी एज कैलकुलेट करता है। एंड देन दैट सिस्टम वेरीफाइज इफ यू आर अबव 18 और 18 मिनिमम टू गिव यू द एक्सेस ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट। So age is not stored in the system, age is not provided by you, but by providing your date of birth, the inference rules will calculate that age automatically. So an inference is a rule that establishes some new knowledge based on truth of certain conditions. आपका truth क्या है, आपकी date of birth है, उसके बेसिस पे वो new knowledge जो है वो जनरेट करता है। Inference creates a new fact from other facts. अदर फैक्ट क्या था आपका डेट ऑफ बर्थ, और एज क्या है भाई आपकी 18 ईयर्स। दिस इज आल्सो अ फैक्ट कि आप 18 ईयर्स हो ना कम या उससे ज़्यादा। दिस फैक्ट इज ड्राइव आफ्टर द कंप्यूटेशंस परफॉर्म। सो आई होप दैट इन्फ्रेंस इज क्लियर। इन्फ्रेंस नॉलेज इज आल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड एज वेल। आपके जो नॉलेज बेस्ड सिस्टम होते हैं, आपको जो एक्सपर्ट्स बेस्ड सिस्टम होते हैं, उसमें ये बहुत जो है वो इस्तेमाल होता है। आपकी कंडीशंस जो है लॉजिक प्रोग्रामिंग आपकी इस्तेमाल होती है उस चीज़ में। जब आप सिम्टम्स बता फॉर एग्जाम्पल कि आपका डॉक्टर का मेडिकल सिस्टम है जिसमें सिस्टम आपसे इंटरेक्ट करता है, सिम्टम्स पूछता है, एंड बेस्ड ऑन दो सिम्टम्स इट गिव यू फीडबैक पे आपको कुछ तरह की डिजीज़ है। सो दीज सिम्टम्स और बेस्ड ऑन जो है पीछे वो जो है वो ड्राइव होता है इस इन्फ्रेंस इंजन के थ्रू विच कंटेन दैट इन्फ्रेंस नॉलेज, और बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइड अपनी इन्फ्रेंस नॉलेज को मिला के वो फीडबैक देता है, वो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर गए। सो इट्स कंप्लीट, और यही चीज़ अक्सर आपके अभी मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। इफ अ पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 कैलेंडर डेज ऑफ द डेट इट इज़ ड्यू, देन द अकाउंट इज डिलिक्विड। अगर आपका जो है पेमेंट 30 डेज के दौरान नहीं होती तो योर अकाउंट जो है वो क्रिमिनल चार्जेस के अंदर जो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका चेक, इफ़ यू प्रोवाइड चेक टू योर कस्टमर और एनी कंपनी और एनी डिफरेंट अदर पर्सन, इफ चेक इज बाउंस, तो वो आपके क्रिमिनल उसमें आता है कि भाई यू डिडंट हैव अ सफिशिएंट बैलेंस टू गिव द चेक टू द कस्टमर। इफ द वेंडर कैन नॉट शिप एन ऑर्डर्ड आइटम विद इन 5 days ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर, देन द आइटम इज बैक ऑर्डर्ड। If the vendors fail to deliver the item within 5 days, तो आपका ऑर्डर बैक हो जाता है, या
इस तरह का जो आपका जो है कि भाई पिज़्ज़ा हट वालों की कि इफ़ द पिज़्ज़ा इज़ नॉट डिलीवर्ड विद इन हाफ एन आवर सो पिज़्ज़ा इज़ फ्री, ठीक है। अ कंटेनर ऑफ अ केमिकल that conform explosive decomposition product is considered expired 1 year after its manufacture date. Whatever container of chemical that is manufactured, that is used in the explosions, it is considered expired in 1 year. Chemicals with an LD5 toxicity, ठीक है यार, उसको आगे बढ़ते हैं. Computations. Computers compute. So one class of business rules defines computations that are performed using specific mathematical formulas or algorithms. Another part of rules of business is computations that are performed during the business. For example, अगर आप कोई पर्टिकुलर आइटम जो है वो परचेस करते हो, फॉर एग्जांपल एक परचेस करते हो तो उसकी एक डिफरेंट प्राइस है. अगर आप एक से ज़्यादा परचेस 5 परचेस करते हो तो आपको उस पर डिस्काउंट मिलता है 10%. इफ यू परचेज मोर देन 5 items and beyond the 10 items you will be given the 20% discount. So these are the computations that are performed based on your orders. So unit price is reduced by 10% for orders of 6 to 10 units, by 20% of orders of 11 to 20 units, and by 35% of orders for more than 20 units. The domestic ground shipping charge for an order that weighs more than 2 pounds is $4.75. अगर 2 pounds तक है तो इतनी है, 12 cents per ounce है तो इतना है. फॉर एग्जाम्पल गो टू द OCS और TCS. सो डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द पार्सल आपकी जो कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट होती है. द कमीशन फॉर सिक्योरिटी स्टेट्स कंप्लीटेड ऑनलाइन. द टोटल प्राइस ऑफ एन ऑर्डर इज कंप्यूटेड एज द सम ऑफ द प्राइस ऑफ द आइटम्स ऑर्डर्ड लेस एनी वॉल्यूम डिस्काउंट्स प्लस स्टेट एंड county sales tax for the location to which the order is being shipped, plus the shipping charges, plus an optional insurance charge. This provides the a formula or computation that will be performed on your order जो कि perform होगी. Documenting business rules, which is extremely important because business rules can influence multiple applications. Organizations should manage their business rules as enterprise level, not the project level assets. A simple business rules catalog will suffice initially. In form of software development, आपके पास SRS डॉक्यूमेंट होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन, बिजनेस रूल्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा. As our university has its own code book regarding the appointment of the appointment criteria, salary criteria, and several other rules, directors responsibility, students responsibility. तो वो कोड बुक है जो यूनिवर्सिटी के पास है, जो which defines the business rules of the university. ठीक है. Same way every company should have that code book of that company जिसमें वो सारे rules जो define होने चाहिए. So if you are going to gather the requirements of the business rules and functional requirements, you must refer to the documentation requirements elicitation technique from that company. You must gather all the necessary documents from the company जो कि आपके उस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल हो गए. So and gather those business requirements or those business rules into the SRS document which are related to the system, because eventually that SRS will be signed by the client जिसको सामने वो चीज़ें आएंगी भाई ये इस तरह का रूल है जो कि इस सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट होगा. ठीक है. Business rules and requirements. Depending on the application, sometimes you invent business rules as you go along and sometimes you discover them during requirements discussion. So depending on the application, sometimes you invent business rules as you go along. यार इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा. इसको कहा जाता है बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग. बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड. उसमें क्या होता है कि आप एक पूरा बिजनेस प्रोसेस जो है उसको री इन्वेंट कर देते हो या रीडिज़ाइन कर देते हो. फॉर एग्जांपल आपको पास जाता है कि भाई आप बैंक अकाउंट के लिए फॉर्म एक बंदे से लें, उस फॉर्म एक बंदे से लेने के बाद उस फॉर्म को फिलअप करें, फिर आप दूसरे बंदे को दें, फिर दूसरा बंदा जो है जाके वो साइन करवा के आएगा, वो आपको रिटर्न करेगा, फिर आप जो है वो तीसरे बंदे को दें, तीसरा बंदा जाके उसके साथ आप कैश अमाउंट अटैच करके आप बंदे को देंगे ताकि वो आपको कैश रिसीव करके आपको रिसिप्ट देगा. आप रिसिप्ट देने के बाद चौथे बंदे को जाएंगे जो कि आपको क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेगा. तो in the initial phase, this process of opening a bank account contains interaction with the 4 people or with the
4 personals of the system. लेकिन इन द न्यू बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग कि जो है वो उसको प्रोसेस को रीडिज़ाइन करते हैं. हम कहेंगे भाई यू गो ओनली सिंगल पर्सन जो कि आपको फॉर्म भी देगा, आपसे फॉर्म भी फिलअप करवाएगा, एंड देन वो आप फॉर्म जाएगा साइन करवा के आपसे अमाउंट लेके, अमाउंट भी अकाउंट में आपके जो है ओपन करवा के जो है वो ऐड करवा के फिर आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड कर देगा. सो दैट रीडिज़ाइनिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस involved the elimination of the etc. or redundant entities. So depending on the application, sometimes you invent business rules as you go along and sometimes you discover them during the requirement discussion. Same another example कि भाई आप ATM business gold card आप introduce करवा दें, जिसमें हम ये कह दें भाई ATM में is through this gold card customer will be able to retrieve like more than 50,000 rupees in a single transaction, or will be able to retrieve more than 1 lakh rupees or 2 lakh rupees from ATM machine in a single day. तो आप कहते हैं भाई हमारे कस्टमर्स जो है वो बिजनेस कस्टमर्स भी यूज़ जो है वो हो सकते हैं, तो उनको पर्सपेक्टिव में रखते हुए जो है ये चीज़ हमें करनी चाहिए इन द न्यू फ्यूचर इकोसिस्टम. सो बिजनेस रूल्स आर इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट डिस्कशन फेज. Often the project stakeholders already know about the business rules that will influence the application, and the development team must work within the boundary that the rules define. कि भाई प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को ऑलरेडी पता होता है कि भाई बिजनेस रूल्स कौन कौन से हैं जो कि इन्फ्लुएंस करें एप्लीकेशन को, एंड द डेवलपमेंट टीम दैट इज गोइंग टू डेवलप द सिस्टम मस्ट वर्क within those business rules boundaries that define those rules. So business rules and requirements, discovering business rules by asking questions from different perspectives. For example, policies, why do we have to do like that, हम इस तरह से क्यों करते हैं, हम इस तरह से क्यों नहीं करते. डेटा मॉडल्स, हाउ आर दिस पीसेस ऑफ डेटा रिलेटेड, जिस तरह एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से कि भाई ये कस्टमर है, ये इसका डेटा इससे किस तरह रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल जो अभी नया सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जिसके अंदर आपके एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी अटैच विद योर नादरा सोशल सिक्योरिटी नंबर या NIC नंबर. आपका करंटली बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो रिलेट कर दी गई हैं. फॉर एग्जाम्पल योर नादरा ID कार्ड इज़ अटैच्ड विद योर बैंक अकाउंट, ठीक है, उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. आपका नादरा जो है आपका मोबाइल सिम कार्ड उसके साथ आपका अटैच कर दिया गया है. नादरा इज़ अटैच विद योर प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपकी प्रॉपर्टी उसके साथ अटैच होकर रजिस्टर होती है. आपका FBR, आपका टैक्सेशन सिस्टम इज़ नाउ बीइंग इंटीग्रेटेड विद द नादरा ID कार्ड. तो फ्यूचर में सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी NIC के साथ अटैच होगी. तो वो कह सकते हैं हाउ आर दिस पीसेस ऑफ डेटा रिलेटेड टुगेदर. एक्टर डिसीजन, आपकी फ्यूचर में आपकी गाड़ियाँ जो आप परचेस करोगे वो भी आपकी NIC के साथ अटैच हो जाएंगी. ओके, सो एक्टर डिसीजंस, व्हाट मे द यूज़र डू नेक्स्ट आफ्टर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क, व्हाट विल यूज़र विल परफॉर्म, व्हाट कैन एंड कैन नॉट हैपन, कौन से इवेंट्स जो परफॉर्म हो सकते हैं, कौन से इवेंट जो परफॉर्म नहीं हो सकते. हाउ डज द सिस्टम नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, सिस्टम डिसीजंस. अगर यूज़र ये चूज़ करे तो उसको ये प्रोवाइड करें, वो बैलेंस इंक्वायरी करे तो उसको बैलेंस इंक्वायरी की विंडो की तरफ लेके जाओ. अगर जो है वो कैश विड्रॉल की तरफ जाए तो उसको कैश विड्रॉल की तरफ स्क्रीन के ऊपर लेके जाओ, जाके उसको पूछो कि वो कितनी अमाउंट रिट्रीव करवाना चाहता है. ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल, व्हाट कॉजेज द चेंज इन द ऑब्जेक्ट स्टेट, फार्मूलाज, व्हिच फार्मूलाज आर अप्लाइड एंड कैलकुलेटेड, रेगुलेशंस, व्हाट डज द गवर्नमेंट रिक्वायर, क्योंकि हर सारी रेगुलेशंस जो चेंज होती हैं. और आप रिसीव करते हो, इफ़ यू होल्ड एन अकाउंट, हर दिसंबर के एंड में आप एक आपको SMS आता है बैंक की तरफ से कि भाई फॉर द नेक्स्ट ईयर दिस फॉलोइंग टैरिफ्स आर अप्लाइड ऑन योर अकाउंट. तो वो रेगुलेशंस जो हैं वो आपकी चेंज हो जाती है. पहले इतने पैसे लग रहे हैं, इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे. बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, सो थ्रू आउट ऑल दिस स्लाइड्स वी हैव डिस्कस्ड what are the business rules, facts, constraints, action enablers, computation and inferences, and they are all part of the business requirements. So anything that describes
financial marketplace or other business benefit that either customers or the developing organization wish to gain from the product is a business requirement. As I've told you कि भाई eventually जो बिजनेस है, जो कंपनी है, जो कोई सिस्टम बनवाना चाह रही है, उसका जो गेन है वो है बिजनेस बेनिफिट और फाइनेंशियल बेनिफिट, कि भाई उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही है, उसकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो रही है. इवन इफ यू कंसिडर यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल विच इज whose primary goal is not to earn the profit maximization, बट इवेंचुअली अगर वो कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाता है, जिस तरह हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम है और जो है वो आपका जो एडमिशन सिस्टम है, आपका अटेंडेंस सिस्टम है, तो अटेंडेंस सिस्टम के लिए जो पहले शुरू में मैनुअल होता था, फिर हम जो है वो ऑटोमाइज होता था, फिर ऑटोमाइज होने के बाद अब वो इंटीग्रेट हो चुका है आपके एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ. तो अटेंडेंस आपकी ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन की जो मार्क्स है उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाती है और आपके फॉर्म्स प्रिंट हो जाते हैं. तो इनिशियली जो है बंदे होते थे जो कि उस फॉर्म्स के ऊपर जो है वो एक एक स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क करते थे, फिर उसकी एलिजिबिलिटी चेक करते थे. तो यूनिवर्सिटी हैड टू पे दोज पीपल, जो बंदा बैठ के काम कर रहा है, अटेंडेंस लगा रहा है, उसको पे तो करना पड़ेगा पर आवर बेसिस या पर डे बेसिस. तो अगर ये इंटीग्रेट हो गया अटेंडेंस सिस्टम एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ, तो वो पैसे पे करना नहीं पड़ेंगे, वो अब ऑटोमाइज्ड हो गया. तो इवेंचुअली यूनिवर्सिटी जिसका प्राइमरी गोल फाइनेंशियल गोल नहीं है, इट इज़ आल्सो गेटिंग द फाइनेंशियल गोल, जो कि इस ऑटोमेशन का एक इवेंचुअल बेनिफिट होता है. ठीक है. सो द फाइनेंशियल बेनिफिट विल इंक्रीज मार्केट शेयर बाय X%, save Y% by per year on electricity now wasted by insufficient units in cost minimization, save $Z per year in maintenance cost that are consumed by the legacy system W. So legacy system will be obsolete now, so जो है वो अब नया सिस्टम आ जाएगा तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसकी रिड्यूस हो जाएगी. बिजनेस रूल्स व्हेन अ कस्टमर सेज दैट ओनली सर्टेन यूजर क्लासेस कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ही माइट बी डिस्क्राइबिंग ए बिजनेस रूल कि स्पेसिफिक लोगों को मुख्तलिफ जगह पे एक्सेस होता है. जिस तरह व्हेन आई वेंट टू डू द PhD इन फ्रांस, तो वहाँ पर डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनते थे. तो वहाँ पे होता था कि एज अ PhD स्टूडेंट we could go to the lab from Monday to Friday, but as an employee or as a professor, वहाँ पे जो professors थे they could go to the lab, access lab on Saturday and Sunday. So कहते हैं depending on the specific conditions ये business rule apply होता है कि professors को access होता है कि वो lab में जा सकें on Saturday Sunday, but as a PhD student I couldn't go to the laboratory on Saturday and Sunday due to some security reasons. So it must comply with some law or corporate policy कि भाई ये corporate policy है, Monday to Friday for students, Monday to Sunday for the professors. Must conform to some standard. If some condition is true, then something happens. Must be calculated according to particular formula. So these are business rules that are applied. कि must be calculated according to the some formula कि 25,000 से ज़्यादा retrieve नहीं होना चाहिए. अगर यूज़र ने पिन कोड एंटर, इफ सम कंडीशंस ट्रू, और इफ यूज़र पुट अ पिन कोड wrong, then do this, otherwise do this. So this is part of the business rule. The functional requirements describe the observable behaviors of the system that will exhibit under certain conditions and the actions that the system will let users take. Functional requirements that how the system will behave when the user is going to interact with the system. ठीक है. अगर यूज़र ने जो है वो अपना कार्ड डाला, तो कार्ड के रिस्पॉन्स में हाउ दैट ATM मशीन विल बिहेव, कि फिर वो आपसे पिन कोड पूछती है. सो दैट आस्किंग ऑन द पिन कोड इज अ पार्ट ऑफ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ठीक है. हाउ द सिस्टम विल बिहेव इफ द प्रेशर एक्सीड्स 40 PSI, द हाई प्रेशर वार्निंग लाइट शुड कम ऑन. एक सिलेंडर के ऊपर अंदर अगर 40 PSI ज़्यादा आपकी गैस आ जाती है तो वो रेड लाइट जो है वो ऑन कर दे. User must be able to sort the project list in forward and reverse alphabetical order. The system sends an email to the idea coordinator whenever someone submits a new idea. For example, when you are going to submit an assignment on LMS system, the LMS will notify me कि भाई आपके स्टूडेंट ने असाइनमेंट जो अपलोड कर दिए. This is the functional requirement. The SRS should refer back to specific rules at the source. So eventually, for the software development, this is the SRS document which we are going to discuss in the following lecture. It will contain those business rules and functional requirements. It obviates the need to change both the business rule and the corresponding functional requirement if the rule changes. It keeps the SRS current with rule changes because
The SRS simply refers to the master copy of the rule because it is signed by both the parties. In the end, it facilitates reusing the system rule in several places in the SRS and across multiple projects without risking an inconsistency because the rules are not buried in the documentation for any single application. फॉर एग्जाम्पल द सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ सेवरल एप्लीकेशन. आपके मोबाइल पे भी चीज़ चल रही है, आपकी जो ऑनलाइन भी चल रही है, आपकी जो थ्रू इन द बैंक भी चल रही है. हर एप्लीकेशन को की एक्सेसिबिलिटी ऑथराइजेशन डिफरेंट होती है. बस बिजनेस रूल मस्ट बी प्रोवाइड दैट consistent view because of the single SRS. So functional requirements, we have discussed business rules, business requirements. They will help us how to develop the functional requirement. Functional requirements are of normally two types: process oriented and information oriented. A process oriented are that the process must perform, a process the system must do. For example, the system must allow registered customers to review their own order history for past 3 years. कि सिस्टम अपनी हिस्ट्री देख सके जिस तरह आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देख सको. The system must check incoming customer orders for inventory availability. The system should allow students to view a course schedule while registering for the class. ठीक है. Another type is information oriented. Information the system must contain. The system must contain customer order history for 3 years. अगर वो इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा तभी तो अपनी 3 years की जो हिस्ट्री है देख सकेगा. इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करेगा तो हिस्ट्री नहीं देख सकेगा. एंड कंटेनिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज ए बिहेवियर सिस्टम जो कि वो यूज़र से हेड इन होता है, जो कि यूज़र को सिर्फ इस चीज़ का पता चलता है जो कि उसको सामने दिखेगा. दिस मस्ट इंक्लूड रियल टाइम इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ ऑल द वेयर हाउसेज. इफ देयर इज अ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम तो उसकी सारी वेयर हाउसेज के हवाले से होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें उनके स्टॉक में पड़ी हुई है. इफ़ द कंपनी यूज सेवरल वेयर हाउसेज, द सिस्टम मस्ट इंक्लूड बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स एंड एक्सपेंस अमाउंट्स ऑफ फॉर करंट ईयर एंड 3 previous years. कि भाई स्टूडेंट जो है सिस्टम जो है मस्ट कंटेन बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स एंड एक्सपेंस अमाउंट. इसको रिलेट कर देते हैं प्रीवियस. इसके साथ स्टूडेंट शुड अलाउ स्टूडेंट्स टू व्यू अ कोर्स शेड्यूल व्हाइल रजिस्टरिंग फॉर द क्लास. अगर कोर्स स्केड्यूल पड़ा होगा सिस्टम के अंदर तभी जो यूजर्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे दे विल बी एबल टू व्यू द क्लास इन ऑर्डर टू रजिस्टर. तो दैट इंफॉर्मेशन दैट रिलेटेड टू द प्रोसेस मस्ट बी contained in the system. That is also part of the functional requirements. In order to differentiate the functional requirement from the non-functional requirements, however, we are going to discuss the non-functional requirements in the immediate chapter which I am going to discuss after this functional requirements chapter. But right now, as the functional requirements came into the view, so we must discuss a little bit about the non-functional, how we differentiate between both non-functional and functional. So non-functional are operational requirements, performance requirements, security requirements, and cultural and political requirements. So operational requirements that are physical and technical requirements in which the system will operate. The system can run on handheld devices. The system should be able to integrate with the existing inventory system. System should be able to work on a web browser पे चलना चाहिए. So operational point of view system चलेगा कैसे? Performance, the speed, capacity, and reliability of the system. And interaction between the users and the system should not exceed 2 seconds. The system downloads new status parameters within 5 minutes of a change. The system should be available for use of 24 hours of the system days per set. So this is the performance related, not the behavior. Feature nahi. Security, who has authorized access to the systems, under which what circumstances. Only direct managers can see personal records of the staff. Customers can see their order history. Systems include all available safeguards from viruses, worms. अब customers can see their order history. आप कहेंगे ये तो previous functional requirements आ रहा है, but security क्या है? During business hours, कि वो business hour में अपनी order history देख सकते हैं. ठीक है, order history तो देख सकते हैं, वो उनकी functional requirements है, लेकिन with the help of non functional requirements हम उसको limit कर रहे हैं कि business hours के दरमियान देख सकते हैं, apart from that वो नहीं देख सकते. तो उसकी एक्सेसिबिलिटी देना जो है दैट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स का सिस्टम शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूएस करेंसी एंड करेंसी फ्रॉम अदर नेशन. इफ अमेजॉन इज बीइंग यूज्ड इन यूएसए, इट शुड प्रोवाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द डॉलर फॉर्म. इफ इट इज बीइंग यूज्ड इन यूरोप, इट शुड प्रोवाइड द प्राइसेस इन द euro currency. So now I think
you should have an idea of the difference between the functional requirements and non-functional. Functional requirements, the basic core feature requirements, and non-functional requirements are the supporting requirements, you can say कि वो operational है, performance है, security है, etc etc. Then example of it, functional requirements, new vehicle management है, system will allow managers to view the current view of the vehicle inventory. The system will allow the new vehicle manager to place order place कर सके, वो inventory जो है वो देख सके, ठीक है. लेकिन ऑपरेशन में क्या होगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, द सिस्टम शुड रन ऑन अ टेबलेट पीसी, system should interface with the shop management system, the system should connect to the printer wirelessly. So this is the vehicle management, vehicle sales management, used vehicle management. These are the functional requirements, the core requirements of the system. Operational, performance, security, cultural and political, these are the non-functional requirements. Functional requirements must be prioritized, which are prioritized with the Moscow model. Moscow defines M for must have a requirement, S for should have a requirement, C for could have a requirement, and W for wish list requirement. Must have means the project objectives cannot be met without this requirement. तो ये functional requirements है जिसकी priority सबसे high है कि ये requirement must होनी चाहिए हमारे system में. Should have, the project objectives can be met without this requirement but not as well as with it. कि भाई जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो सकते हैं लेकिन ये भी होनी चाहिए ताकि हम एडिशनल चीज़ें भी कर सकें, ठीक है. यहाँ हम ये जो बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम अच्छे तरीके से जो है वो हम कर सकें. कुड हैव, दिस रिक्वायरमेंट ओनली मैप्स टू वन और मोर प्रिंसिपल्स, कि ये जो है वो रिक्वायरमेंट हो सकती थी जो कि अभी है या नहीं है. विश लिस्ट, दिस रिक्वायरमेंट डज नॉट मैप टू एनी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स, कि ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो दीज प्रोडक्ट्स दीज रिक्वायरमेंट शुड बी नॉट शुड बी बट होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. यार ये भी हो हम कहते हैं ना कि इस तरह से, बट दे डू नॉट मैप टू द प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स बट इट विल बी पार्ट ऑफ द विश लिस्ट, कि अगर ये हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है. फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वेयर डू दे कम फ्रॉम, डिक्लेयर्ड बाय द स्टेक होल्डर्स, इंटरव्यूज, वर्कशॉप्स, कैजुअल कम्युनिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कहाँ से आएंगे, उसके स्टेक होल्डर्स है जो कि उस सिस्टम को बनवाना चाह रहे हैं. कंसर्निंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज, वर्कशॉप्स, ठीक है. proposed by business analyst all the time any way that is needed, कि बिजनेस एनालिस्ट जो है प्रपोज करेगा कि भाई कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आ सकती हैं. बिजनेस एनालिस्ट जो है वो हम आप लोग सिस्टम एनालिस्ट एंड डिज़ाइन के सब्जेक्ट में हमने पढ़ा होगा. एक होता है सिस्टम एनालिस्ट, आप दूसरा होता है बिजनेस एनालिस्ट आपके पास होते हैं, आपके पास जो है वो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं. तो यू हैव 5 to 6 different categories of analysts. So this is the end of the lecture. So in today's lecture we have discussed the business rules, business requirements and functional requirements. Eventually functional requirements that are going to be used to represent the business rules and the business requirement, and they are represented in this form जो कि आपको सामने स्लाइड के ऊपर दिख रहा है, ठीक है. So this is the end of the lecture, and the next lecture we are going to discuss those non-functional requirements. Okay.